Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to complete the remaining questions that we left yesterday, and I believe once we are done with these nine questions, we are done with the practical part of the equity analysis. After this, I'll be uploading the videos for mutual funds, efficient market hypothesis, and a few other chapters that we left in between. But before that, I want my subscribers to be 350 after this particular video. Currently it's 313, so not a huge gap in between. Tell your friends to subscribe to my channel. थोड़ा काम तुम करो and थोड़ा मैं करती हूँ, ठीक है? Okay. Now let's move on to the first question for the day. DCL Limited is expected to declare a dividend of 5. Okay. At the end of the current year. So if I make a timeline over here like this, तो अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, at the end of this particular year, I will be getting a dividend of 5. The earnings of the company are growing at a rate of 10%. Find out the value. Okay. Again, required rate of return is 15%. Before I move on forward, let's calculate the value only. See, the formula was this, right? बट यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ईयर एंड का डिविडेंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. बट मुझे ऑलरेडी यहाँ पे ईयर एंड का डिविडेंड दिया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई कैन सिंपली राइट 5 अपॉन KE minus G, that is 15% minus 10%, that would be 5%. So this will come out to be the value. If I do 5 divided by 5%, this is coming out to be 100. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. If the current market price is equal to the value, that is मेरे को market price बता दिया उसने 100 है, then what is the expected price after 1 year? Now it is telling me कि मुझे value निकालनी यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे dividend कौन सा चाहिए होगा, ये वाला. अब क्या करूंगी मैं, 5 into 1 plus G divided by KE minus G, that is 15% minus 10%. ठीक है? Let's calculate this particular value. This will come out to be 5 into 1.1 divided by 5%, 110. So if I am looking at the value here, it is coming out to be 100. But if I look at the value at the end of first year, it is coming out to be 110. So can I say capital appreciation हुआ 10 का? Right. Now, if an investor buys the share now, मतलब यहाँ पर 100 का शेयर खरीद कर, sell it after 1 year, sell it at the rate of 110. Receiving dividend, what is the dividend yield and the holding period return? Now, how will you calculate the dividend yield? See, when I am talking about the yield, you need to remember just one thing, कि हमें रिटर्न्स निकालने, क्या निकालने, रिटर्न्स. ठीक है, अब रिटर्न्स कैसे निकालते हो, क्या आपको मिला अपॉन क्या आपने इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो डिविडेंड में आपको कितना डिविडेंड मिला था, 5 का डिविडेंड. कितना इन्वेस्ट करके, 100 रुपीज इन्वेस्ट करके. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5%. ओके. होल्डिंग पीरियड रिटर्न, for how many years did you hold your share? 1 year. उस 1 year में आपको दो चीज मिली. First of all, you got 5 rupees as dividend and you got capital appreciation of rupees 10 and you invested 100. So what did you get? ये हो गया आपका 10 plus 5, 15%. ठीक है, let's check the answer. तो प्राइस जब मैं 0 पे खरीदी मेरा 100 आ रहा था, 1 पे खरीदी तो 110 आया. 5% is the dividend yield and holding period is 15%. ठीक है, इसने कैपिटल गेन भी निकाल दिया. It wasn't told कि हम निकाले and it's okay. ठीक है, तो 5% and 15%. Now let's move on to the second question. A management consulting company is expecting to pay a dividend of 12 per share at the end of the year. Again, if I make a timeline, I'm standing here
at the period of, at the end of year 1, I am expected to get dividend of 12. The dividends have been growing at a rate of 10%, and this growth rate is expected to continue. The equity capitalization rate applicable is 12%. Assume that the share is fairly priced in the market. Okay. Now, before I move on how to calculate the PE ratio, let's calculate the value of share. Okay. Again, मुझे dividend यहाँ का दिया हुआ है, इस period का नहीं दिया हुआ, तो instead of doing D0 into 1 plus D, I will simply write 12 upon KE minus D, that is 12% minus 10%, comes out to be 2%. This will come out to be 600. The value of share is 600. ठीक है? Now, PE ratio क्या निकलती है? See, price earning. Price earning. तो price is market price. Earning is EPS. So PE ratio will come out to be 600 divided by 20. Is it 30? Yes, 30 is the PE ratio. Value came out to be 600. You did market price upon EPS and you got it as 30. Now let's move on to the third question for the day. The relevant details of the company are these. Okay. I have to calculate these ratios. Okay. Can I just simply tell the formula? Okay. EPS. EPS is nothing but the profit after tax which is available to the equity shareholders, okay, upon number of shareholders. What did I mean when I wrote this particular part is that हम preference अगर कोई capital होगा, preference share capital, तो उनका जो dividend होगा वो minus कर देंगे, then we will find out कि equity shareholders के पास finally कितना बचा, ठीक है? अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? एनुअल टर्नओवर मेरा इतना है, तो ऑपरेटिंग टर्नओवर इज 20%. इफ आई डू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 lakhs. ओके, 10 lakhs. 10 lakhs में से आई हैव टू पे दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट, आई हैव टू पे दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट, तो आई विल डिडक्ट ऑल द इंटरेस्ट, ठीक है? देन आई विल गेट profit after interest, right? After that, I will deduct the 30% of tax rate. Okay, I will get profit after tax, but this is available to both preference shareholders and equity shareholders. Preference shareholders का part हटा दूंगी, कितना? 12% इतना dividend, ठीक है? And then finally I will get the equity shareholders का part. Okay, यहाँ रखेंगे वो value and then we will divide it by number of shareholders. अब number of shareholders कैसे आएंगे? This is 20 lakh divided by 100. 20 lakh divided by 100. I'm sorry. 20,000 is the number of shareholders that exist in this particular company. And hence we will be able to find out the EPS. Okay. देख लेते हैं इसका. See, सबसे पहले सेल्स इतना था, 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, इंटरेस्ट निकाले दोनों. Both kind of interest have been deducted. We got profit before tax. We deducted 30% of tax. We got profit after tax. Now, after that, I deducted the preference dividend. This is the profit that is available to the equity shareholders. These are the number of shareholders. Finally, we divided both and we got EPS. Okay. Now, dividend per share. Okay. Dividend per share कैसे निकालेंगे? EPS is coming out to be 15.30. This is the earning. Okay. Now in the earning, I am paying only 50% and I am retaining 50%.
तो डिविडेंड कितना है मेरा 50%। अगर मैं 15.30 का 50% करूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 7.65 डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो ये अगर मैंने ईपीएस का किया है तो आई एम मल्टीप्लाइंग अर्निंग पर शेयर इनटू 50%, तो मेरा जो आएगा 7.65 इज द डिविडेंड पर शेयर। 50% of 53 is 7.65. Market price. How do I calculate market price? If I just rewrite the formula of PE ratio, PE, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। PE बोलो, प्राइस अर्निंग, प्राइस इज मार्केट प्राइस, अर्निंग इज ईपीएस। ठीक है, मुझे PE रेशियो दिया हुआ है, ये MPS मैं निकाल लूंगी, EPS came out to be 15.3. I will just cross multiply and I will get the market price. Get it. Now earning yield. Earning yield कैसे निकालूंगी? EPS upon return. Return कैसे compare करूं? MPS into 100. Dividend को कैसे करूं? DPS upon MPS into 100. यही आएगा, EPS upon market price into 100, DPS upon market price into 100. ठीक है। Now let's move on to the fourth question for the day. The shares of company are currently available at a price of 30. The market price of share is 30. Risk-free rate is 5%. Expected market return is 17%. The beta of the company is 1.5. The year-end expected dividend from a share is, मतलब मुझे D1 दिया हुआ है 4, मुझे ग्रोथ रेट दिया हुआ है 6, सब कुछ तो दे दिया, निकालना क्या है? वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू के लिए अगर तुम फॉर्मूला फिर से लिखो तो मुझे चाहिए होता है दिस। अब इसमें KE नहीं दिया हुआ, KE कैसे निकालूंगी? यूजिंग द CAPM फॉर्मूला। ठीक है, तो RF की जगह आई कैन राइट 5%, RM की जगह 17% माइनस 5% इंटू 1.5. This will give me KE. I will compensate this particular value in this particular formula and finally I will get the value. Should a prospective investor buy this share? ये डिसीजन मैं कैसे लूंगी? वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर करके। ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, we will say yes, we will like to buy the share because share is underpriced. ठीक है, and vice versa. अगर वैल्यू कम आती है और मार्केट प्राइस ज्यादा है तो we will say the share is overpriced. See, इसने सबसे पहले KE निकाला, came out to be 23%. फाइनली उसने वो फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, D1 था इसलिए we did not do 1 plus G, KE minus G. Question. This is a very good question. ठीक है, इसमें ना टाइमलाइन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, The management of a company has distributed a dividend of ₹10. मतलब आज इसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे 10 के। The current growth rate is 5%. आज का ग्रोथ रेट 5% चल रहा है। Now the company wants to expand its option. अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी एक्सपैंड करे या तो कंपनी एक्सपैंड ना करे। ठीक है, and decides not to pay any dividend for the next 4 years. इसने कहा कि अगर हम एक्सपैंड करते हैं, हम 4 साल तक तुम्हें कोई डिविडेंड नहीं देंगे। तो D1 मतलब let's keep it as 1 2 3 4 only, 1 2 3 4. ठीक है, we will not give you any sort of dividend for next 4 years. Okay, तो D1 D2 D3 D4 is 0. Okay. After that, the company expects to pay the dividend at ₹20. उसके बाद कंपनी क्या बोल रही है कि we will give you 20 का dividend after all. ठीक है, after the 4th year, and उसका growth rate would be 10%. ठीक है, and that will lie for forever. That is perpetuity cash flows. अब अगर कंपनी एक्सपैंड नहीं करती है तो डिविडेंड डिसकंटिन्यू नहीं होंगे, मतलब तुम्हें 10 का डिविडेंड मिलता रहेगा, ग्रोथ रेट 5% रहेगा, एंड KE इज गिवन आउट टू बी
15%। ओके, तो यहाँ वैल्यू निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिंपल फॉर्मूला लगाना है D0 × 1 + D अपॉन KE माइनस D। तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वेरी इजीली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं P4 की वैल्यू निकालती हूँ, मतलब प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो? D1 अपॉन KE माइनस D। अब D1 दैट इज जो 5th ईयर से मिलेगा मुझे, 20/15% माइनस 10%। But this is the value for the end of 4th year. I have to bring it in today's term. तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखूंगी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लिखूंगी? 15% फॉर 4th ईयर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू दैट विल कम आउट इन टुडेज टर्म। ठीक है, लेट्स सी इसने क्या किया है। नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो D1 D2 D3 4 वुड बी 0, D5 क्या हो जाएगा 20, ग्रोथ 10% KE। तो अगर मैं D0 1 + D अपॉन KE माइनस D वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, तो मुझे ऑलरेडी D1 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि टाइम लाइन पे मैं यहाँ खड़ी हूँ एंड मुझे 5th वाला दिया हुआ है दैट इज 20, तो मुझे D1 की वैल्यू दी हुई है। तो आई डिड नॉट डू 1 + D अगेन, ठीक है, अपॉन KE माइनस D comes out to be this, but this is the value of P4, that is I am standing here, I need to reach at point 0। क्या करूं मैं? 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर कंपनी एक्सपैंड नहीं करना चाहती देन इट इज वेरी इजी, D0 × 1 + D अपॉन KE माइनस G comes out to be 105। Now let's move on to the 6th question. ABC Limited is currently paying a dividend of 1, expected to grow at 7%. Value निकालनी है मुझे। This is very simple question. I have to use simply D0 upon 1 + D upon KE minus D. यहाँ पे KE 15% होगा 16%। यहाँ पे G इन्होंने चेंज कर दिए एंड यहाँ पे KE एंड G दोनों चेंज कर दिए। सिंपल, D0 × 1 + D upon KE minus D। ठीक है, KE चेंज है एंड लास्ट टू में G चेंज है। From the following 3 shares you have to select the best share कौन सा है एंड तीनों का प्राइस निकालना है, डिविडेंड यील्ड निकालना है एंड कैपिटल गेन निकालना है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, प्राइस यू नो कैसे निकालते हैं। ठीक है, दैट इज प्राइस निकालना है तो इट वुड बी D0, ठीक है, अपॉन P0 की बात कर रही हूँ। ठीक है, डिविडेंड यील्ड वुड बी डिविडेंड्स कितना मिला है डिवाइडेड बाय प्राइस। कैपिटल गेन यील्ड के लिए आपको P1 में निकालना पड़ेगा। P1 कैसे निकालोगे? ठीक है, P1 निकाल के P0, दिस इज द कैपिटल गेन दैट यू विल अर्न। ठीक है, तो कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100, दैट वुड बिकम योर कैपिटल गेन यील्ड। इसने भी यही किया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 4 का था, ग्रोथ 5% था, तो प्राइस P0 इज दी D0 अपॉन KE माइनस D। डिविडेंड कैसे निकाला है? इतना डिविडेंड इतने पे मिला है 15%। P1 निकालना है इन ऑर्डर टू फाइंड दी कैपिटल गेन। दोनों का डिफरेंस लो, कैपिटल गेन आया 1.33। 1.33 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 26.67, यू विल गेट इट टू बी 5%। 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू तुम्हारी बुक्स में कितना शेयर कैपिटल दिख रहा होगा? इज दी 50 लाख प्लस तुम्हारे रिजर्व्स पे दिख रहे होंगे दैट इज 6 लाख। तो 56 लाख इज द बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू। बट इसने पूछा है बुक वैल्यू पर शेयर दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आ गई? टोटल बुक वैल्यू अपॉन दी नंबर ऑफ शेयर्स
for company X. So 56 lakh divided by 5 lakh according to me. Let's check. Total book value कैसे आ गई? Equity share capital plus reserves, that is 56 lakh. पर शेयर निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगे, ठीक है. Now, second last question for the day. PVR Limited expects कि मेरा EPS is 20 for the current year. The company earns return on equity ROE 15% and retains 40% all its earning. The required rate of return is 12%. I have to calculate the value. How will I calculate the value? This is very easy. We have done this particular formula. D की जगह I can write EPS 1 minus B upon KE minus BR. So I will put all these values, this is R, in this particular formula, and I will be able to find out the value of share. Once I calculate the value of share, I will compare it with 180 in order to decide whether should I invest or not. The last question for the day is Darwin Limited Company has the following details. ROE, that is R. Okay. My EPS is given out to be 5 and my DPS is 2. तो मैं रिटेन कितना कर रही हूँ? 5 में से अगर मैंने 2 उड़ा दिए, मतलब डिविडेंड में दे दिए अपने शेयर होल्डर्स को, तो मैंने 3 अपने पास रिटेन करके रखा है. तो रिटेन की अगर मैं परसेंटेज निकालूं, दैट वुड बी माय 60% of retention. So B comes out to be 60%. The required rate of return is 10%. I have to calculate the PE ratio. In order to calculate the PE ratio, I need two things. That is price, that is market per share and EPS, right? तो मैं कैसे निकालूंगी? Market price is nothing but the value of share. Value कैसे निकालूंगी? Using this particular thing is EPS, that is 5 upon 1 minus B upon KE minus BR. BR is 60%, R is 15%, and KE is 10%. I will be able to find out the value per share. I will divide it by EPS, that is market price per share, and I will get the PE ratio. See, R is 15%, ठीक है. G is equal to BR. See, KE is equal to 10%, ठीक है. Now, this is coming out to be, wait, yeah. Hence, B is equal to 60%. That is the retention ratio that we have calculated. Okay. इसने क्या किया है? Simply 5 into 1 minus B. हमने ये किया, ठीक है. देखते हैं कि सही है या नहीं. कैसे? 9 कैसे आया इसका? ये BR करके this, ठीक है. हमारा ये सही है. KE is 10%. अब ये 2 कैसे आया? अगर मैं 5 में से ये निकाल दूं 1 minus 60% into 5, तो हमारा भी क्या आ जाएगा? 2. तो instead of using this particular and इसे अलग से याद रखने के लिए you can use this particular formula. Finally, the chapter is over, and I believe this much practical question is enough for the equity analysis. मैं तो इससे ज़्यादा नहीं करके जाऊँगी, ठीक है. So thank you so much for watching this particular video. All the best for your exam, and I will be uploading more videos soon. Now I will be covering majorly the theory part because practical part is made almost over except the mutual fund, जिसमें 1-2 formulas और है, ठीक है. Have a great day. Bye.